All right. Any problem in the homework that I gave? Era, Jawad, any homework question that you were unable to solve? Era, सारे solve हो गए आपसे? Yes, sir. Jawad, what about you? सर नहीं हुआ मैंने करने वो टाइम नहीं मिला वो करने ओके। आज हमें कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना है। तो जैसे हमने परम्यूटेशन केसेस से किया है वैसे ही हम कॉम्बिनेशन भी केसेस से करेंगे। सो प्लीज गिव द हेडिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। Why do we use combination? We use combination to find the total number of selections. We use combination to find the total number of selections. Let's discuss a case. इसका एक ही केस है, एक ही केस से मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज करवा दूंगा। Suppose there are total 15 pupils और इन 15 pupils में से there are 5 VIPs and 10 ordinary pupils. And I have to select 5. अब ये जो 5 मुझे सेलेक्ट करने हैं ये फॉर ईच पार्ट इट विल रिमेन सेम। Part A, there is no restriction. No restriction. So out of total 15 people, I have to select 5 people. So what should I write? अब मैं P नहीं लिखूंगा, अब मैं combination कर रहा हूं, अब मैं C लिखूंगा। So what should I write? 15C5. 15C5. And with this, what answer am I going to get? 3003. Part B. Two VIPs are selected. तो बच्चे कहते हैं सर हाँ आपने कहा था 5 VIPs हैं तो उसमें से 2 VIP सेलेक्ट करेंगे। दे राइट 5C2 which is partially correct. Why is 5C2 not completely correct? 15C2 लेकिन अगर मैं 15 में से 15 में से 2 लिख दूं क्या? 15C2 लिखूं क्या जवाब?
अगर मैं 15C2 लिखता हूँ तो क्या ये गारंटीड है कि 2 वीआईपी आएंगे? Sir, फिर तो 5 15 में तो ऑर्डिनरी लोग भी हैं। 5C2 into 3 फैक्टोरियल हो सकता है। फैक्टोरियल नहीं यूज होता कॉम्बिनेशन के अंदर। हमें क्वेश्चन ये था कि हमें 2 वीआईपी सेलेक्ट करने, लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि टोटल 5 लोग सेलेक्ट करने। तो वीआईपी में से तो मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, बाकी के जो 3 बचे वो मैं किस में से सेलेक्ट करूंगा? 10C2 और यस, वो मैं ऑर्डिनरी में से सेलेक्ट करूंगा। 10C3 10C2, 10C3, यस। फाइंड आउट द आंसर। Is it 1200? Yes. Okay. Part C. No VIP is selected. टेन सी फाइव। ये सारे के सारे हम ऑर्डिनरी में से ही सेलेक्ट करेंगे। 10C5 is it 252? Yes. Okay, part D. More VIPs than ordinary are selected. More VIPs than ordinary are selected. Now what am I going to do? अलग अलग कंडीशंस बनेंगी भाई। अगर मुझे टोटल 5 लोग सेलेक्ट करने हैं और वीआईपी ज्यादा होने चाहिए, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि 3 वीआईपी हो जाएं और 2 ऑर्डिनरी हो जाए। फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि 4 वीआईपी हो जाएं और 1 ऑर्डिनरी हो जाए। फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पांचों के पांचों वीआईपी हो जाएं और 0 ऑर्डिनरी। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? इसको तमीज से कैसे सॉल्व करते हैं? वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल with 2 columns, one column for VIPs and one column for ordinary. First condition 3 VIPs 2 ordinary, क्योंकि VIP ज्यादा होने चाहिए। Second condition 4 VIPs 1 ordinary. Last condition 5 VIPs 0 ordinary. चलो भाई, जवाब मुझे बताओ, पहली कंडीशन का आंसर कैसे आएगा? 3C5 into 10C2। 5C3 into 10C2, बिल्कुल सही। 5C3 into 10C2. What is the answer? 450. 450. Then 5C4 into 10C1. And then 5C5 into 10C0.
इन तीनों कंडीशंस के आंसर्स को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 501। पार्ट ई, at least one VIP is selected. There are two methods of solving this. At least one VIP is selected. At least one का मतलब क्या होता है? What is the meaning of at least one? There has to be one, but there can be more than one. Yes, at least one का मतलब one या one से ज्यादा VIPs होने चाहिए. तो again let's draw a table क्योंकि अलग अलग conditions बनेंगी. तो उमर सबसे कम VIPs पे कितने लगाऊं? एटलीस्ट वन लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम उमर कितने VIPs होने चाहिए? योर माइक इज नॉट वर्किंग. कम से कम एक VIP होना चाहिए. यस, नाउ आई कैन हियर यू उमर. Urban. यस, अगर मैं एक VIP यूज कर रहा हूं तो उमर में ऑर्डिनरी में क्या लिखूंगा? कीपिंग इन माइंड कि टोटल मुझे हर पार्ट में 5 सेलेक्ट करने हैं. एक ऑर्डिनरी का मतलब 4 VIPs, फिर टू, सॉरी, एक VIP का मतलब 4 ऑर्डिनरी, फिर हम VIPs बढ़ाते रहेंगे, ऑर्डिनरी कम करते रहेंगे. कितना कहां तक जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम कितने VIP सेलेक्ट कर सकते हैं? 5. 5. बिल्कुल. Please start finding the answers. Five C1 into 10 C4. 5 C2 into 10 C3. For the third condition, we have already found the answer in the previous part. So we are not going to solve it again. Directly write down 450. उसके अगले पार्ट का आंसर भी था हमारे पास, उसके अगले पार्ट का आंसर भी था हमारे पास. What is the answer of the first condition? 1050. 1050. Okay. Answer of the second condition. 1200. और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का तो हमें पता ही था. Please add these values and tell me the final answer.
2751. 2751. But then there is another very easy method. इतनी सारी कंडीशंस के आंसर्स निकालने के बजाय एक और मेथड भी है। अगर मुझे एटलीस्ट वन वीआईपी का आंसर निकालना है, एटलीस्ट वन वीआईपी का मतलब वन या वन से ज्यादा वीआईपी, मैं इसका ऑपोजिट आंसर निकाल देता हूँ। मैं निकालता हूँ 0 वीआईपी का आंसर, यानी कि पांचों के पांचों ऑर्डिनरी, which is going to be 10C5 252। और फिर उमर इस आंसर को मैं किससे माइनस कर दूं? मैंने ऑपोजिट निकाल दिया, इस वक्त मैंने 0 वीआईपी निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी में भी तो करते, कभी कभी ऑपोजिट आंसर निकालते हैं और फिर किससे माइनस करते हैं। हमने परम्यूटेशन में भी लगाया था ये कॉन्सेप्ट, आई रिमेंबर। ठीक है आंसर किससे? 15C5। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हमने पहले पार्ट में निकाला था, 15C5 टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो टोटल में से अगर मैं 0 वीआईपी माइनस कर दूंगा तो मुझे एटलीस्ट 1 वीआईपी का आंसर मिल जाएगा, जो कितना आएगा बताओ जरा। 2751 वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था। पार्ट एफ, at least 2 VIPs are selected. अब एटलीस्ट 2 वीआईपीज का मतलब होता है कम से कम 2 वीआईपीज हों या 2 से ज्यादा हों। तो फिर बच्चे बोलते हैं सर आपने तो फजूल में टेबल मिटा दिया, उस टेबल में नजर आ रहा था 2 वीआईपीज 3 वीआईपीज 4 वीआईपीज 5 वीआईपीज, तो हम तो डायरेक्टली टेबल से कर लेते सर। ठीक है आप कर सकते हैं, आई एग्री, आप वो टेबल वाले मेथड से कर सकते थे, लेकिन अगर मैं टेबल वाले मेथड से नहीं करना चाह रहा, मैं ये टोटल वाले मेथड से करना चाह रहा हूँ, तो क्या कोई मुझे बता सकता है मुझे टोटल में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? मुझे टोटल में से 0 वीआईपी वाली कंडीशन भी माइनस करनी पड़ेगी, और कौन सी कंडीशन माइनस करनी पड़ेगी टोटल में से? 1 VIP। मुझे 1 वीआईपी, एक्सेलेंट है राज, मुझे 1 वीआईपी वाली कंडीशन भी माइनस करनी पड़ेगी। फिर अगर मैं टोटल में से 0 वीआईपी और 1 वीआईपी दोनों माइनस कर दूंगा तो मुझे वो सिलेक्शंस मिलेंगी जिसमें 2 वीआईपी या 2 से ज्यादा वीआईपी होंगे। जवाब, डू आई मेक सेंस टू यू? Yes, sir. ओके, सो टोटल माइनस टोटल हमारा कितना था? उससे पहले बेटा 1 वीआईपी निकाल लो। 1 वीआईपी का मतलब है 4 ऑर्डिनरी, 5C1 इंटू 10C4, कितना आएगा? 1050। 1050। सो टोटल -252 -1050, हाउ मेनी सिलेक्शंस? 1701। 1701। किसी ने टेबल वाले मेथड से निकाल के चेक किया, ये आ रहा है आंसर? if you have drawn the table, please check from the table and tell me whether you are getting the same answer or not.
ओके, पार्ट जी। One particular person must be selected. Now, this is what creates a problem. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, जितने भी पार्ट्स मैं करवा रहा हूं आपको इस केस के। वन पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी सिलेक्टेड। तो वो जो एक पर्टिकुलर इंसान मुझे सेलेक्ट करना है, वो मैं कितने लोगों में से सेलेक्ट करूंगा? 15. If I write 15C1, it means I am selecting one person out of those 15 people. तो फिर वो जो पर्टिकुलर इंसान मुझे चाहिए था, जरूरी तो नहीं है वो सिलेक्ट हो, फिर तो 15 में से कोई सा भी एक सेलेक्ट हो जाए। हाउ वुड यू बी श्योर दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सिलेक्टेड? पंद्रह में से एक सेलेक्ट करोगे तो भाई 15 में से तो कोई सा भी एक आ जाएगा ना। फिर मुझे तो ये खास इंसान है, ये खास इंसान है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो हाउ एम आई गोइंग टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन? Nobody is going to respond. Okay, मैं बता देता हूँ। For this particular person, it is going to be 1C1. 1C1, इसी एक इंसान में से यही एक इंसान चाहिए। 5 में से कोई एक या 10 में से कोई एक या 15 में से कोई एक नहीं चाहिए, यही इंसान चाहिए, 1C1। Now tell me how many are left and how many more do we have to select? 14C4. 14 left and we have to select 4 more. 14C4. क्या आंसर आएगा? 1001. 1001. Part H. Now, in these 15 people, we have a set of twin brothers. इन दोनों में से दो भाई हैं जो जुड़वा हैं। We have two brothers who are twins. The condition is only one must be selected. Only one must be selected. मुझे इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करूं? इन दोनों में से किसी एक को कैसे सेलेक्ट करूं? 2C1 into 13C4. 2C1। दोनों में से एक सेलेक्ट हो गया तो बच्चे कहते हैं सर जब एक सेलेक्ट हो गया तो 15 में से तो 14 बचे ना आपके पास। 14 बचे या 13 सर बचे? दूसरा नहीं हो सकता ना, तो 13 13 सी। हाँ, दूसरा सेलेक्ट नहीं हो सकता। जो इनमें से एक सेलेक्ट नहीं हुआ भाई, वो बाकी 14 लोगों में थोड़ी चला जाएगा, उसको कटा देंगे, उसको सेलेक्ट ही नहीं करना। तो बाकी बचे हमारे पास 13 लोग। उन 13 में से हमें कितने और सेलेक्ट करने हैं? 4। 4 मोर। वैसे मैंने आपसे कहा था 2C1 नहीं लिखते, 2 लिखते हैं तो 2 ही लिखिएगा। 2 इंटू 13C4। 1430 पार्ट आई। अब इन 15 पीपल में देयर इज अ कपल जिनकी हो गई है लड़ाई, ब्रेकअप हो गया। कंडीशन क्या है?
कंडीशन ये है कि वो बोल रहे तू जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, और वो बोल रही है तू जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ उल्टा बोल दिया मैंने शायद। खैर, दोनों की लड़ाई हो गई है। द कंडीशन इज द कंडीशन इज बोथ कैन नॉट बी selected together. Both cannot be selected together. तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा, बट लिटिल डू द स्टूडेंट्स रियलाइज कि एक कंडीशन और भी बन सकती थी, और वो दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? Neither of them are selected. यस, नीदर ऑफ दीज टू आर सिलेक्टेड। कि दो, या तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो या दोनों के दोनों ही सेलेक्ट ना हो। कंडीशन तो ये है कि दोनों के दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। ये हो सकता है कि कोई एक सेलेक्ट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक भी सेलेक्ट ना हो। सो लेट्स मेक टू कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, लेट्स सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज टू। 2C1 इंटू 13C4, कोई एक सेलेक्ट हो गया दोनों में से। कंडीशन नंबर 2, 2C0, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, एंड 13C5, पांचों के पांचों उन 13 लोगों में से सिलेक्ट हो गए। प्लीज टेल मी द आंसर। 1287. 1287, add these two। कोई मुझे बताएगा क्या आंसर आ रहा है? 2717. 2770। Sir, can you explain part one again? This one, condition number 1. Yes. Okay, both cannot be selected together means we are not going to select both of them, but we could select any one of them. So if we are selecting any one of them, what should I write? 2C 1. 1। बाकी कितने बच्चे हैं टोटल में से? 13. 13, and how many more are we going to select? 4. 4, 13C4, right? Any confusion? No, sir. Okay. The first question that we will do is question number 38 from the past paper.
Yes. Part A. Four parts in a play are to be given to four of the girls chosen from the seven girls in a drama class. Find the number of different ways in which this can be done. You can read this again, but please tell me why is this selection and not combination and not permutation, sorry. The order of the parts does not matter. Okay. ये तो कोई थोड़ा सा रटी रटी हुई explanation लग रही है मुझे यार और the order does not matter. Okay, I agree, order does not matter. But we are actually choosing the girls. We are choosing, we are selecting, we are not arranging. So how should I find the number of selections? Total कितना है? Choose कितना कर रहे हैं? 7, And how many are we selecting? 4, Yes, 7C4. $35. Part B. Five Chinese, four Indian, two British. How many are we selecting? 11. 11. How many are we selecting? Oh wait, 3. 3. Part 1. No Chinese singer is chosen. तो सारे के सारे जवाब हम किसमें से सिलेक्ट करेंगे? सिक्स में जाते 6 में से इंडियन ब्रिटिश मिला के 6 बनते हैं तो 6 में से सिलेक्ट करेंगे 6C3 20 part 2 one singer of each nationality is chosen यानी कि चाइनीज का भी एक इंडियन का भी एक ब्रिटिश का भी एक 5C1 into 4C1 into 2C1 40 part 3 the three singers are all of the same community. Any idea how we are going to solve this? Sir, we can't choose 3 British singers, so how would we Yes, do so that? British is out.
We can't choose 3 British singers, so British वाला option is out. But इसमें दो अलग अलग conditions बनेंगी. We can either choose all 3 Chinese singers, or or means plus the other condition would be if we choose all the Indian singers, right? So there are going to be 2 conditions. Either we choose all Chinese or we choose all Indian. तो क्या आंसर आएगा? 14. 14. Oh, okay. Now come to question number, not the past papers, before the past papers. Question number 7. And I expect you people to speed up a little. जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, देख लो, पढ़ लो, समझ लो. ये उसी टाइप का केस है. दो इसमें वीआईपीज हैं, 2 वीआईपीज एंड 8 ऑर्डिनरी. अपनी आसानी के लिए मैंने ऐसे लिख लिया. बट प्लीज टेल मी हाउ मेनी आर वी सिलेक्टिंग? 4. We are selecting 4. Part A. It says both the president and the secretary are selected. Both the president and the secretary, which means 2C2 आपने दोनों के दोनों को सेलेक्ट किया, और जो बाकी के 8 लोग बचे उनमें से कितने सेलेक्ट किए? 2. 2, क्योंकि टोटल 4 सेलेक्ट करने थे. So what are we going to get? 28. 28. Part B. Either the president or the secretary, but not both. My question is, एक कंडीशन बनेगी या 2 कंडीशंस बनेंगी? 2. गलत जवाब. दूसरी कंडीशन अगर आप बना रहे थे तो अगर आप ये कह रहे थे कि सर दोनों के दोनों ही सिलेक्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन तो कह रहे दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, इधर द प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी. हाउ कैन यू से कि मेरी एक कंडीशन ये बनेगी कि जिसमें दोनों के दोनों ही सिलेक्ट ना हो? वो तो गलत हो जाएगा. आपको तो दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ एक कंडीशन बनेगी. यू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दीज टू, 2C1, and from the remaining 8, how many are you going to select? 3. 3. Hundred and 12. Question number 8.
The last question of today's class, question number 8. Calculate the number of ways, no restrictions. So by 15 people have applied for a job, but there are only 6 people. Are we going to arrange these 6 people for the job, or are we going to select these 6 people for the job? Select. Select 15C6. $5,005. Now comes the important part. The firm decides that 3 of the 6 vacancies shall be filled by women and 3 by men. यानी कि आपको 3 women select करनी है और 3 men select करने हैं. The applicants consist of 7 women and 8 men. Calculate the number of ways in which this could be done. तो भाई जो आपके पास 7 women है उसमें से हम कितनी women select करेंगे? 3. 3. और 8 men से कितने men select करेंगे? 3. 3. So 7C3 into 8C3. $1960. And then the tricky part. The tricky part. One of the 7 women is the wife of one of the 8 men. So we have a couple over here. Please read and tell me what is the condition. क्या condition है? The wife and the husband are already selected, so one of the women and one of the men are already selected. ठीक है 2C2. I selected both the wife and the husband. Now, out of the total women, how many women are left and how many more will I select? 6C2. Yes, 6 women are left and I will select 2 more women. And out of the total 8 men, how many men are left and how many men am I going to select? 7 are left and 2 will be selected. Yes, 7 are left and 2 more will be selected. Please find out the answer. Jawad and Umar, did you understand this? Yes, sir. हो गया सर सर. Okay. कितना आंसर आ रहा है इसका? 315. 350. Now please mark your homework. Question number 9, 10, 11, 12.
14, 15, past papers, 34, नहीं 34 नहीं करना, सॉरी 36, 35, 28, 29, 30, 31 and 32. ठीक है, प्लीज ये प्रैक्टिस कर लेना। And for the last recording of combination, for permutation and combination, the last recording जो लास्ट क्लास होगी वो एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन मैं उन्हीं को वो रिकॉर्डिंग भेजूंगा जिन्होंने मुझे सारा होमवर्क करके भेजा होगा इस परम्यूटेशन का, पिछली क्लास के परम्यूटेशन के क्वेश्चंस और ये वाले कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। ओनली देन आस्क मी फॉर द लास्ट रिकॉर्डिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।